everybody. I hope you are fit, fine, healthy, and well. So, this is part 3 of the chapter named as Weather, Climate, and Adaptation. In my previous videos, मैंने discuss किया था about weather and climate, and here I will start from the adaptations. ठीक है? So, what is adaptations? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है? तो देखते हैं एडेप्टेशन होता क्या है. सबसे पहले तो ये जानो कि बहुत सारे क्लाइमेट जोन्स होते हैं, राइट? क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में. वी यूज्ड टू सी दैट, राइट? सो दे हैव profound impacts on the animals. Since animals जो है वो अपना house build नहीं करते for the protections against the weather, और वो लोग technologies भी नहीं करते use for growing desirable crops, और changes accumulate in their bodies. जो भी चेंजेस काइंड ऑफ होते हैं वो इनके बॉडी के अंदर होते हैं दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन दी वाइल्ड, राइट? तो एडेप्टेशन का डेफिनेशन ये रहा दैट एडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म an animal or plant undergo alteration in the structure or functions of its whole body or its parts that help them to become better fitted to survive and multiply in its environment. एडेप्टेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एनिमल या फिर प्लांट अंडरगो करते हैं जिसमें उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस और उनके होल बॉडी या पार्ट्स हेल्प करता है उन्हें टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एरिया. ठीक है? That we'll discuss from some of the examples. Okay, to that examples हम लोग जो पढ़ेंगे तो that will help us to know more about the adaptations. Okay, so it is important to understand that कोई भी change होता है, any change can be regarded as an adaptation only जब कोई organism as well as its offspring जो भी उनका babies वगैरह होते हैं they demonstrate the particular traits in its subsequent generations. Adaptation does not take millions of years and many generations to come by. ठीक है? Now let us look a closer or take a closer look on some of the animals that have become highly adaptive in different regions of the earth. So let's start from reading from the polar region. ठीक है? पोलर रीजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. भाई पोलर रीजन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो जो सन रेज होते हैं दे आर स्लैंटेड एट द पोल्स थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पोल्स में स्लैंट होता है. ठीक है? इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग इन द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त जो सन है इट डज नॉट एट ऑल सेट एट द नॉर्थ पोल, वाइल फॉर द अदर 6 months जो सन है वो राइज ही नहीं होता है. ठीक है? अगर विंटर्स की बात करें तो जो टेम्परेचर होता है इट कैन बी एज लो एज -37 degrees Celsius इन द पोलर रीजन. So here we'll discuss about some of the animals which have adapted the kind of they have some ability to survive in that kind of region. ठीक है? Those are polar bears, penguins and seals, about which we'll read further. There is a part which is do you know, and यहाँ पे क्या लिखा हुआ है polar bears और penguins के बारे में कि जो polar bears होते हैं और penguins होते हैं they are literally वो लोग poles में रहते हैं. ठीक है? अगर polar bears की बात करें तो वो हमें found होते हैं, they are found as इन नॉर्थ पोल, यानी कि वो लोग नॉर्थ पोल में फाउंड होते हैं, और पिग्विन्स की बात करें तो वो हमेशा हमें साउथ पोल पे मिलते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द एडेप्टेशंस इन पोलर बियर. क्या है एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स? यू कैन सी दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन इन पोलर बियर्स. इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें कुछ पोलर बियर का पिक्चर दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि उसका एडेप्टेशंस ही हमें दिख रहा है. सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि थिक लेयर ऑफ ब्लबर और फैट अंडर द स्किन हेल्प्स इन इंसुलेशन ऑफ हीट, यानी कि इनके जो फर है पोलर बियर का जो फर है ये उसे हेल्प कर रहा है टू insulate the heat. ठीक है? in the polar region. Second, if you will see तो under the white fur एक black कलर का skin है which is present in the polar bear that absorbs the heat from the sun. ठीक है?
नेक्स्ट है उनके ईयर्स। ईयर्स में क्या है, इनके पास स्मॉल से ईयर्स हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हीट के लॉस को। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स, जो कि पोलर बियर्स जो हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग से लेग्स हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं फॉर स्विमिंग और फॉर रनिंग। देन दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड टिप्स जो कि हेल्प करता है टू कैच करने में उनके प्रेज वगैरह को, ठीक है। प्रेज क्या है, तो शिकार, ठीक है। देन कम्स लार्ज फीट विच डिस्ट्रीब्यूट वे ओवर द आइस। फिर हम लोग देख सकते हैं उसका फर और सोल जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ द फीट। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द बेटर ग्रिप एंड इंसुलेटर, हेल्प करता है गर्म रखने में, ठीक है। वाइट फर जो है वो लाइक इट इज़ काइंड ऑफ कैमोफ्लेज इन द स्नो, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो ये है पोलर बियर के बारे में। इनके पास क्या है, फिजिकल एडेप्टेशंस है जिनकी वजह से पोलर बियर्स जो है वो इतने ठंड में भी वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। सो पेंगुइन्स क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा पेंगुइन्स के बारे में पढ़ लिया जाए। पेंगुइन्स डेवलप करते हैं सोशल बिहेवियर, दे हडल टुगेदर टू कंजर्व बॉडी हीट, ठीक है। उनके पास स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बोन्स होते हैं, अनलाइक द बर्ड्स दैट हेल्प देम टू ड्राइव एंड स्टे अंडर वाटर फॉर फूड। तो वेरियस एडेप्टेशंस जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं अबाउट द पिगविन्स एंड देयर सर्वाइवल, as we know that they survive in North Pole. So in this picture, through this picture actually we'll understand more about the penguins. So इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि penguins जो हैं, सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि इनके पास thick layer of blubber है जिसे हम लोग fat बोलते हैं, which is under the skin is present, help in insulation of heat. Then comes body covered. The body covered with thick fur, ये जो है ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट द हीट लॉस। देन फोर लिम्स प्रेजेंट है, फोर लिम्स दे हैव। सो दिस फोर लिम्स क्या है, दिस इज मॉडिफाइड टू फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई वेरी फास्ट अंडर द वाटर। क्लियर। इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स भी हैं जो कि इन्हें स्विमिंग और रनिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। देन दे हैव ब्लैक फेदर्स, ये ब्लैक कलर के जो फेदर्स हैं विच इज़ प्रेजेंट एट द बैक, ये एब्जॉर्ब कर देता है जो भी हीट होता है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। देन द वाइट फर यू आर सीइंग, ये वाइट फर जो है इट वाज फॉर एडिंग इन कैमोफ्लेज अगेंस्ट वाइट स्नो। देन कम्स streamlined body to reduce drag in water. Then it is webbed feet which is adopted for swimming. Then large feet to distribute the weight over large area on ice, ठीक है। वेरी गुड। सो दिस इज द फिजिकल एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। तो पेंगुइन्स के पास ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिससे वो ऐसे साउथ पोल में रह पाती हैं, तो दिस आर द खूबियाँ, ओके। नाउ विल रीड अबाउट द next which is adaptation in seals. Now let's talk about something about these seals. तो seals जो हैं दे कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर बहुत टाइम तक ये अपनी सांस रोके रह सकती हैं। इनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड माउथ है जो कि इन्हें अलाउ करती है टू ईट अंडर वाटर विदाउट टेकिंग द सी वाटर इनसाइड, राइट। दिस इज़ वाई इनके पास स्पेशलाइज्ड माउथ है, मतलब इनकी माउथ जो है वो स्पेशलाइज कहलाती है, ठीक है। सो द वेरियस एडेप्टेशन डेवलप्ड इन सील्स आर गिवन इन द पिक्चर, यू कैन सी and follow also. So let me zoom it so that you can see the picture. First we can see the streamlined body and absence of neck. This is helpful for reducing the drag in water. Then thick layer है इनके पास blubber type की and fur for insulation of heat only. Then long claws इनके पास हैं, ठीक है, that help them grip slippery ice surface. Then they have big eyes which are specially modified to see under water, ठीक है. They also have nostrils, ठीक है, that are slits that close naturally under water, अपने आप ही बंद हो जाता है when they are in water. देन अगर बात करें तो उनके पास फ्लिपर्स भी होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग जो कि हेल्प करते हैं उन्हें टू कवर considerable distance on land and swim in water. Clear? Okay.
Now we'll talk about the other kind of region, which is rainforests in tropical region. तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान ले कि ये कैसा रीजन है. सो एवरग्रीन ट्रीज जो भी हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं एंड हमें फूड प्रोवाइड करती है. ऑल्सो द कॉन्स्टेंट वार्म एंड वेट क्लाइमेट इज ड्यू टू दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कंटेन करता है हाफ ऑफ ऑल द एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, येट it is covered with only about 10% of Earth's surface. Okay, ये क्रिएट करता है एक बहुत बड़ा कंपटीशन बिटवीन द स्पेसीज इनहिबिटिंग द एरिया. As a result of the fierce competition, both prey and predators species show highly advanced adaptation to survive and thrive in this kind of region. So, let us talk about this animals which actually live in this kind of place. So first animal जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत ही like you all know this kind of animal very well. So adaptation in lions. Like most predators, lions adopt करते हैं कुछ special hunting strategy जिसे that is they wait at mice and bushes and attack the prey with a sudden burst of speed. The various physical adaptation found in lions are shown below. So, eyes in front allow depth perceptions and ability to judge distance to aid in hunting. यानी कि hunting के लिए उनको eyes बहुत helpful होते हैं because eyes से उनको पता चलता है कि कितना distance उन्हें travel करना है for catching that prey. Okay. Heavy muscles and strong shoulders in forelimbs are present that allows in hunting of large prey. Understood? Then sandy colored का coat है which helps camouflage in the dry shrubbery. Then they have loose belly skin जो कि allow करते हैं animals to be kicked by prey with little chance in injury. Then they have some thick mane help male look bigger and protects the throat. Then next is इनके पास होते हैं बहुत sharp teeth and claws जो कि help करते हैं for their hunting. Then they also have tongue which is rough designed to peel skin of the prey from the flesh and flesh from bones. फिर उनके claws भी हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें पिक्चर में. Paws with retractable claws for grabbing and catching prey. तो ये जो claws हैं, paws हैं, ये बहुत help करते हैं to catch the prey. Then this is all about lions. Now we'll talk about the adaptations in deer. Okay. So this is the image and you go through it, you will understand properly. Okay. डियर की बात करें तो डियर जो है ये प्रेज होते हैं, ठीक है, एंड ये हमेशा अधिकतर मतलब हमें ग्रुप्स में दिखते हैं बिकॉज ये खतरे को टालने के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, ठीक है. एंड जब भी इन्हें डेंजर फील होता है तो मतलब डेंजर से कैसे फील होता है, दे यूज देयर kind of special organ which they had which helps them to understand about the danger. Okay, when they flee due to danger from a predator they raise their tails to communicate to it to the other members of the herd. Summer के time में white tailed deer जो हैं they have reddish brown coats which they shed for grayish brown one in winters to aid in camouflage. The other bodily adaptations depicted in deer is shown here in the picture. You just go through it. इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि eyes दिख रही है, ठीक है, at the side of the head allowing wider area of vision to spot predators. They also have very sensitive nose and ear to detect danger even while on the move. Well developed incisors and molars teeth for grazing and chewing plant food. Body cover जो है उनको help करता है to camouflage in the surrounding, यानी कि surrounding से घुलने मिलने में help करता है. Then strong legs they have that helps them to run in danger. Understood? Now we'll talk about adaptation in elephants. तो elephants के बारे में क्या ही कहें, उनके बारे में तो बहुत जानते हैं हम लोग, ठीक है. तो elephants जो हैं ये they have to
मूव इन हर्ड्स, यानी कि वो अपने ग्रुप में ही मूव करते हैं. इन फैक्ट मासिव साइज ऑफ एलिफेंट्स जो हैं इट एक्ट्स एज अ ग्रेट एंटी प्रेडेटर्स एडेप्टेशन. The other physical adaptations developed in elephants can be shown here. So यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है सब कुछ. थिक रफ स्किन है जो कि प्रोटेक्ट करती है while moving through the rough and dry vegetation. इनके पास है tail which is used to squat away flies. Then thick big feet है इनके पास जो कि कैरी करते हैं उनका huge body. इनके पास है strong tusk जो कि हेल्प करते हैं इन द डिगिंग, फीडिंग, मार्किंग एंड फाइटिंग. ठीक है. देन कम्स huge ears, right, with thick network of blood vessels that helps them to cool their body off जब भी वो भीग जाते हैं. ठीक है. देन आते हैं हम उनके ट्रंक पे. तो उनका जो ट्रंक है इट इज़ एन अमेजिंग अपेंडेज दैट कैन पिक अप फूड, खाने को उठा सकता है, सक कर सकता है वाटर यानी कि पानी पी सकता है, एग्जामिन कर सकता है कोई भी चीज़ को. देन move heavy objects, it sprays water over its body from cooling as well. ठीक है. Okay. So elephants तो बहुत ही लाइक काइंड ऑफ कॉमन है, इनके बारे में बहुत सी मूवीज़ भी निकल चुकी है, तो एलिफेंट्स के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. सो लेट अस कीप आवर डिस्कशन टिल हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल रीजन विच विल बी आवर लास्ट पार्ट टू डिस्कस. ओके. सो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट स्टिल इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट. ठीक है. So thank you everyone for watching my video. If you have not liked and subscribed to my channel, please go and do it.